Yes, good evening everyone. Welcome to Lukmaan IAS. This is the daily Takkar Rapid Series and this is class 88. So today's lead topic is Nobel Prize in Physiology or Medicine. Right. So we are aware about this development, try to cover all the Nobel Prize and especially the concept that is involved there and or the research. It's not requiring the details. ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं होती है. Basic understanding is important, and along with that its applications, how it has helped to especially in the health sector. When we talk about medicine, how it has helped in the health sector. If it is talking from the physics aspect, then how it has helped into the development of certain technologies, or if it is economics, so how it has helped all over the world different economies to overcome certain challenges. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. यस, गुड इवनिंग विजय, आनंद. So let's discuss today's quotation first, which is we are let's say discussing for our essay and ethics preparation. Today's let's say quotation we have let's say taken the quotation Warren Banis. So he's talking about leadership. Okay, leadership is the capacity to translate vision into reality. See, many times there are essay topics related to leadership. There can be question related to leadership as a quality in ethics. ठीक है, if you say that the 7 principles of Nolan committee, तो उसमें से एक leadership quality है for public services in public life, right? So leadership, what is leadership? It is a quality, right? Quality in individual to lead group of people. Or we can say that to achieve intended or stated objective, mobilizing the group of people to achieve certain objective. Okay, the leadership quality. Now this leadership quality, it is what he's saying. Leadership is the capacity to translate vision. That's why I'm telling you objective. Basically it is vision, aim, objective, and that is translated into its reality. Okay, so basically leadership is all about this one. So we know that it is also kind of, we can say, management of the resources. It is also, we can say, leading all the team, or we can say team efforts, building the team efforts. Along with that, ensuring the appropriate coordination, communication among the team members. At the same time, owning the responsibility. Owning the responsibility. Like for example, you can take example of APJ Abdul Kalam. So when any missile mission in DRDO used to fail, so he always came forward and took responsibility as a leader. And when the mission was successful, he actually put forward the team to take the credit, and he was sitting behind. So this is how leadership works. ठीक है, तो जब भी so yes, whenever there is, let's say, problem, the leader will come forward to deal with that problem. So we can say the leader rise to the occasion. लीडर राइज टू द ओकेजन. जो बाकी लोग नहीं आगे आ सकता है प्रॉब्लम को डील करने के लिए, वहां पे जो है ट्रू लीडर सामने आता है, एंड दैट पर्सन एक्चुअली मोबिलाइज द पीपल टू ओवरकम दैट चैलेंज प्रॉब्लम. दैट इज लीडरशिप क्वालिटी. नाउ एज अ IAS officers, or we can say civil servants, you also need to have leadership qualities. Okay, because you are going to lead the team, you are going to utilize the resources in efficient manner, so that requires leadership. ठीक है, to what you can say the vision, to convert the vision of the government into the reality, be it in terms of implementation of welfare schemes, programs, or the objectives of the government, उसको reality में. Is it relatable? Examples. Let's say you can take example of APJ Abdul Kalam, you can take example of Atal Bihari Vajpayee, okay, Nelson Mandela, you can take the example. ठीक है, तो great leaders के आप examples दे, गांधी जी, महात्मा गांधी. So vision into reality.
right? Or even Jawaharlal Nehru, first 15 years after independence, he led the country, and yes, he was to some extent successful. जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारा जो इकोनॉमी है या कोई भी चीज है तो इट वाज वेरी नेसेंट स्टेज, राइट? सो ही मोबिलाइज्ड द रिसोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन. We can give such kind of examples. You can give present day examples of leadership. E. Sridharan, Metro Man of India. E. Sridharan, leadership quality, delivering the project before time, efficiency, leadership quality होता है ये, ठीक है. Similar example of MS Dhoni. Of course, leadership quality in sports. MS Dhoni is a well-known name. ठीक है, Captain Cool. Yes, everyone is right. जैसे हम देखते हैं कॉपीज इवेलुएट करते हैं एथिक्स का, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट MS धोनी का एग्जाम्पल. ठीक है, वर्गीस कुरियन इज वन सच. MS Swaminathan recently in news. Yes, so many example, variety of examples can be given. Political leader, religious leadership is also there. ठीक है, सो प्रोमिनेंट लीडरशिप ड्यूरिंग द सोशो रिलीजियस मूवमेंट यू कैन गिव. ठीक है, सो विवेकानंदा इज देयर, सो यू कैन गिव such kind of examples. ठीक है, फाइन. लेट्स टॉक अबाउट नाउ टुडेज क्वेश्चंस. These are the topics. Right, let's talk about them one by one. What should be answer to this question? Okay, Nobel Prize 2023 for Physics has been awarded for which of the following? ठीक है, वो मेडिसिन वाला क्वेश्चन नीचे होगा कोई, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, बट है वो क्वेश्चन भी. ओके, सो फिजिक्स इट वाज अवॉर्डेड फॉर, यस, एटो सेकंड. अभी द हिंदू एनालिसिस में पढ़ाया सर ने, है ना, जयदू सर ने पढ़ाया होगा ना. यस, बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू we can say finding out how electrons are, we can say, moving in a fast speed, and this property of electrons, how it can be used for different applications. Okay, be it laser beam or development of different we can say electronic goods, or application in even photography, development of different lenses. ठीक है, तो उसके लिए ये यूज होगा, development of ultra fast pulses of light. ठीक है, so B is the correct answer here. Fine. Now, what about this one? National pension scheme was in news. So in past UPSC has asked question related to NPS, so it can be asked again. Only salaried persons or employees are eligible for joining NPS. Even I have joined NPS. Okay, I'm not, let's say, salaried person. ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू दैट ऑफ कोर्स ऑल पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 years. ठीक है, मैं कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं हूँ, ठीक है, सैलरी नहीं है, तो इट्स लाइक अ प्रोफेशनल सर्विस. ठीक है, सो यू विल कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ टर्म्स. फाइन, सो ओनली सैलरीड एम्प्लॉयज आर एलिजिबल, तो इट्स नॉट ट्रू, रादर एनीवन कैन जॉइन द एज ग्रुप 18 to 70 years. ठीक है, now NPS is regulated by SEBI. Now we know that for pension fund regulations we have Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA. So NPS is regulated by PFRDA. Now the uniqueness of this particular scheme is that once you registered and the account is created in your name, then you are given a permanent number that is called as PRAN number, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर. व्हाट इज योर प्रान, ऐसा पूछ, बेसिकली वो पेंशन अकाउंट के लिए, एनपीएस के लिए. ओके, एंड दिस इज लेट्स से फिक्स्ड नंबर थ्रू आउट लाइफ ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, वो जो अकाउंट में जो भी होगा उसका पैसा जो भी है, सो दिस इज ट्रू वी कैन से, बट फर्स्ट वन एंड सेकंड वन आर इनकरेक्ट, सो दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर. यस, for second question it's A. Very good, Vijay, that is correct. Now let's move on to next question. What about this one?
ऊपा एक्ट 1967, ठीक है। अभी न्यूज में था, अभी एक कोई न्यूज चैनल के जो हेड थे उनको अरेस्ट किया है ना, ऊपा न्यूज क्लिक, हाँ न्यूज क्लिक फाउंडर। So yes, the act is in use. In past UPSC has asked question in mains examination 2019 में वो आया हुआ था, तब amend किया हुआ था act, right? So law aims to prevent activities directed against the integrity and sovereignty of India. That is true. Basically, it is the major, we can say, anti-terror law in the country to deal with the terrorism. So this is true. Officers from NIA only are empowered to investigate cases under the act. This is not true. Rather, it is one of the provision. Rather, in general, officers, the rank of, we can say, Deputy SP and SP, so they are empowered under UPA Act to investigate the matters. And the officers of NIA of the rank of inspector, ठीक है, inspector, not DG, ठीक है, inspector, so they are empowered under provisions of UPA Act. ठीक है, तो ये ओनली नहीं है यहां पर, दिस इज इनकरेक्ट, फाइन। सो ए इज द करेक्ट आंसर. So for UPA Act, you should be knowing that the bail provisions are very stringent. One cannot get easily the bail under this. Along with that, the punishment is also very stringent under UPA Act. Mains से ज़्यादा important है क्योंकि it is related to internal security. ठीक है, टेररिज्म से डील करने के लिए इट इज द लीगल फ्रेमवर्क. ठीक, व्हाट अबाउट दिस वन? I told you that there is every year question like this: India's rank in export production of certain agriculture crop or produce, right? So India is the largest producer of raw silk in the world. India is second largest. China is the largest. Okay. In India, within India, Karnataka leading state, thereafter Andhra Pradesh, thereafter Assam. Leading 3 states. Tamil Nadu nahi hai. Okay. First one is China is the largest exporter of raw silk in the world. That is true. Okay. After that India and thereafter Vietnam. So we can say this is correct, but these two are incorrect. And that's why again A is the correct answer. ठीक है, okay. Yes, description based question. A particular species is described in this paragraph. Smallest and fastest of all apes. It is found in northeast India. It has strong family bonds. It is facing a threat primarily from cutting of trees for infrastructure. It is only species of apes, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, found in India. अब इससे की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, क्या होना चाहिए इसका आंसर? पास्ट में ये पूछा भी है यूपीएससी ने. The only species of ape found in India. Hulak gibbons, Assam. Okay, Hulak gibbons. A is the correct. Arboreal species है and they are threatened species, endangered. तो arboreal होते हैं, ऊपर branches पे ही ज़्यादा रहते हैं ये, ठीक है. And second is we can say that they have strong family bonds. जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है ना हैबिटेट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से, दिस इज मेजर थ्रेट दे आर फेसिंग. ठीक है, ऐसे कूद रहा है, आगे दिख रहा है ट्री नहीं है, फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, बीच में रोड आ गया मानने के लिए, ऐसा सिचुएशन है. ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर. फ्लॉग गिबन्स, यू कैन सी द फोटोग्राफ्स. एक्चुअली देयर वाज वन क्विज. यहाँ पे जो क्विज आता है ना, आज एनिमल डे सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड एनिमल डे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज होता है. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी स्पेसीज बेस्ड क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, सो वी शुड नॉट स्किप सच काइंड ऑफ थिंग्स. इंट्रीगिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं ये स्पेसीज के बारे में, ऐसा कुछ यूनिक पूछते हैं जीके टाइप का, जो यूपीएससी पूछ रहा है आजकल स्पेसीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल. सो वी शुड बी just aware about
ये क्या कौन से स्पेसीज की बात कर रहा है क्या है, ठीक है, was also previously discussing, yes of course, ठीक है, this is the species. Interim bail, okay, so लॉ से रिलेटेड आजकल पॉलिटी में क्वेश्चन आ रहे हैं, लीगल टर्म्स, लॉ, ओके, so you should be ready with such kind of terms because many times the crimes are being done, headlines में होता है, तो वो लॉ से लीगल टर्म्स होते हैं, देखो न्यूज़ में, उसका मीनिंग समझ के लेना है अच्छे से, क्या है वो इंटरिम बेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स, तो इसलिए ये आपको तैयार करके रखना. Interim bail is a temporary form of bail granted by a court during pendency of application of anticipatory bail or regular bail also. ठीक है, so interim relief जिसको हम बोलते हैं ना कि still it is pending, तो interim bail can be given by the judges. So we can say that this is correct statement. Interim bail is granted at the discretion of court, that is true. There is fixed time period for which it can be granted. There is no fixed time period. It can be given for 1 week, 1 month, 1 year. ठीक है, इसका कोई fixed time period नहीं है. Okay, according to the situation, or let's say how the court perceives the situation, the case, accordingly such kind of bail is given. ठीक है, तो this is incorrect. Now interim bail is granted only in Supreme Court and High Courts. अब हमें सही लग सकता है ये, जो कि मूवीज का इम्पैक्ट है, बॉलीवुड के कुछ भी हो गया कि वो हाई कोर्ट दिखाते हैं, वो केस वहां पे लड़ रहा है बेल मिलने के लिए, सेशंस कोर्ट नहीं दिखाते जनरली जल्दी से, है ना, बट इट इज ऑल्सो गिवन बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, नॉट ओनली इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो वी कैन से दैट ओनली लिखा हुआ है, यू कैन यूज दैट लॉजिक ऑल्सो. Fine, so only one A is the correct answer. ठीक है. देखो, parole and furlough are basically given for certain purpose. Let's say all the people who are convicted, they are let's say doing the sentence that is given by the court. ठीक है. But let's say the parole is given for any kind of let's say फंक्शन, सोशल फंक्शन इज देयर एट होम, जो बच्चे का शादी है समझो, ठीक है, जो कन्विक्ट है उसके बच्चे का शादी है, तो वो 2-3 दिन का उसको क्या दे, पैरोल पे वो बाहर आ सकता है, बोलते हैं ना पैरोल पे बाहर आ गए. बट फरलॉ जो होता है खास करके स्पेसिफिकली उसको सोशल लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए होता है, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होता है, टू इंटरमिंगल विद द फैमिली, जो बॉन्ड टूटा हुआ है, ठीक है, तो that is we can say furlough. Okay. Many times what happens, 7 साल 10 साल के लिए वो जेल में रहते हैं, 14 साल के लिए, सडनली दे कैनॉट इंटीग्रेट विद द सोसाइटी, बाहर आएंगे तो उनको सब अलग ही दिखेगा, तो उनको बीच बीच में बाहर क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, स्पेशली देयर फैमिली मेंबर्स एंड बॉन्डिंग, ठीक है, तो उसके लिए होता है. पैरोल इज फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, जैसे हमारे संजय दत्त कितनी बार बाहर आए पैरोल पे, ठीक है, इसकी पार्टी उसकी पार्टी करते हो, इधर उधर घूमना होगा, बेसिकली दैट इज पैरोल, बट फरलॉ इज डिफरेंट, ठीक है. हाँ, ठीक है. व्हाट अबाउट दिस वन नाउ, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. Okay, so it was given to Katalin Kariko and Drew Weissman. That is true. First one. They are awarded the prize for their discovery-related techniques based on weakened and inactivated whole viruses. These techniques are related to vaccine making. There are different techniques for let's say techniques for vaccine making. One of them is like giving weakened or inactivated let's say virus itself. But this, let's say Nobel is given for development of mRNA vaccines, or the technique that is developed to develop mRNA vaccines, which has helped especially during COVID pandemic. mRNA vaccines were much more effective as compared to this inactivated और adenovirus वाले जो हमने लिए दो उसके बाद भी हुआ कोविड,
ठीक है, बट ये ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में दिया गया था mRNA वैक्सीन, इंडिया में तो बाद में आया बहुत ही, तब तक हो गया था फुल्ली वैक्सीनेट. Anyway, so this is not related to inactivated vaccines, virus vaccines. So this is incorrect. Now, Max Thaler was awarded a Nobel Prize in Physiology for developing hepatitis B. Now, this is purely factually in specific information based. So I would advise such kind of question you should not take risk. क्योंकि यहाँ पे एक तो नाम पूछ रहे हैं, इस बार के नाम तो ऐसे है, तीनों अवार्ड आए जो तीनों, आज भी आया है शायद, कौन सा हाँ, तो अभी केमिस्ट्री का आया है आज, तो कल न्यूज़पेपर में आएगा. ठीक है, तो उनके भी नाम बहुत ही अलग है, साइंटिस्ट होते ही ऐसे हैं. ठीक है, तो नाम भी अलग ही है इनके. फाइन, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नेम्स, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट्स बोथ फैक्चुअल इन नेचर. आपको सिर्फ इतना ही याद रहेगा शायद एग्जाम तक. ठीक है, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी स्किप्ड. Anyway, this let's say Nobel was given for development of vaccine for yellow fever. Yellow fever disease. ठीक है, so this is incorrect. That's why answer should be A here. All right. ICC was in news. Why? Armenia joined. So that's why it is in news. Armenia, Azerbaijan conflict is going on. So we know that Azerbaijan is, let's say, supported by Turkey. तो ये जो conflict है ना वैसा है. Armenians are generally supported by Russians, largely Christian majority community. Azerbaijan largely Muslim community. So Turkey and other let's say Islamist countries, they are supporting Azerbaijan. Internationally, Nagorno-Karabakh region is recognized as a part of Azerbaijan. अब उन्होंने फुल्ली कवर कर लिया उसको. ठीक है, नाउ आर्मेनियंस एज अ लेट्स से स्टेप टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, आईसीसी को उन्होंने रेटिफाई कर दिया, रोम स्टैट्यूट. नाउ आईसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर रोम स्टैट्यूट, दैट इज ट्रू. इट इज द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट विद जुरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स. दिस इज ट्रू. सी आईसीजे तो पहले आया हुआ है, ठीक है, और आईसीजे इज नॉट डीलिंग विथ द क्रिमिनल एस्पेक्ट्स. ओके, लार्जली इट इज डीलिंग विथ सिविलियन एस्पेक्ट्स ऑफ बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, एंड दैट इज पार्ट ऑफ यूएन एंड इट्स, वी कैन से, सिस्टम, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स सिस्टम. आईसीसी इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन. ठीक है, सो इट इज अ सेपरेट थिंग एंड इंडिया इज नॉट द मेंबर. ठीक है, India has not ratified Rome Statute. This is incorrect. Putin became the second head of UN security to be subject of ICC arrest warrant, first being the Xi Jinping. बहुत ही स्पेसिफिक है ये भी, बट ये भी लिखा हुआ था वो आर्टिकल में. He became the first. ये नहीं थे. ठीक है, तो अभी ऐसा बोलता है ना कि when let's say a particular member और वी कैन से पर्सन हुज लेट्स से अरेस्ट वारंट इज देयर, तो वो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता. दूसरे जो आईसीसी के जो कंट्री है वहाँ पे आएगा तो उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, राइट. सो यस, दिस इज वी कैन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ओनली टू. फाइन, ओके. व्हाट अबाउट दिस वन? Shreyas scheme, earlier also we had asked this particular scheme. It is related to scholarship, especially for graduate youth. ठीक है, तो yes, the such kind of let's say scholarship is given to top class education for SCs. Basically these all four are sub schemes of this Shreyas scheme. ठीक है, yes, it is the umbrella scheme. I guess मैंने उस टाइम पे भी ये आपको याद दिलाया था. श्रेयस स्कीम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. फाइन, ऑल डी इज द करेक्ट आंसर. मैं बताता हूँ.
यहाँ पे दिया है क्या? ठीक है, ओके. So scholarship for higher education for young achievers scheme, Ministry of Social Justice and Empowerment. Last question for today. मॉस्को फॉर्मेट, ये न्यूज में था, मीटिंग हुआ था मॉस्को फॉर्मेट का रिसेंटली, राइट? व्हाट इज इट रिलेटेड टू? इज इट रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कोई थर्ड कंट्री में होगा ना मीटिंग, मॉस्को में कैसे होगा? ये भी तो लॉजिक यूज करना है हमें एग्जाम में, ठीक है. इट इज रिलेटेड टू, वी कैन से दैट ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी, पीसफुल, वी कैन से दैट ट्रांजिशन दैट हैड हैपेंड इन तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, ठीक है. तो ये पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान उससे रिलेटेड है मॉस्को फॉर्मेट. All members of Moscow format are also members of SCO. Now this is not true. Rather, all members of SCO are members of Moscow format. उससे ज़्यादा members है Moscow format में. Around 40 countries they participate in discussion. ठीक है. तो आपको ये भी logic use करने आना चाहिए. You can eliminate this. And it is, let's say, saying correct statement. So again we can say that D is the correct answer. Fine, ठीक है, okay. So these are today's 10 MCQs. Any question related to this? Fine, let us stop that. Okay.